Today, hello, start. Good morning, students. Today we are going to start with theory of consignment, and first we will finish the questions of goods sent on approval basis. So very easy questions, friends. I hope you read last part, that is numerous transactions. We completed till casual approach, and second one is frequent approach. So you are aware about casual approach and frequent approach. But before starting any session, first we will start with basic rules of accounts. Basic rules of accounts are divided in three parts. That is a traditional, first one we will divide it in two parts. One is traditional approach and second one is modern approach. Traditional approach talks about personal account, normally due relationship first. Whenever you are selling goods, it will be a debtor, and whenever you are buying goods, it will be a creditor. Okay, so due relationship, whenever there is credit transaction, in that case, first rule will be debit the debtor, credit the creditor, and debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. So this is the first rule of account. Then second one is real account debit, what comes in credit, what goes out, and nominal account debit, all expenses and losses credit, all incomes and gains. Remember, personal and real account are carried to balance sheet and nominal accounts are transferred to P&L. So in final accounts, you will understand this concept. Personal and real account carried to balance sheet and nominal accounts are transferred to P&L. So final accounts will be your next chapter. After that, modern approach is divided in 5 parts: expenses debit balance, income credit balance, liability credit balance, asset debit balance, and capital credit balance. Asset minus liability is equal to capital, income minus expense is equal to profit. Profit shows credit balance and loss shows debit balance. So it is all about basic rules of accounts. If you are not getting this concept, please watch my first session. Second session, you will get clear all these basic rules of accounts, those students who joined now. Today, intermediate result and final results are came out. So many students who are normally, so result is good this time. 21% is the result percentage for first group, second group 18%, and both groups 11%. So see, out of 100, only 21 students are going to pass. So please, friends, make sure that you will appear for both groups in intermediate. But in case of foundation, remember, if your basics are strong, then only you are going to pass. So अभी भी आपके पास 4 महीने हैं. Still you have 4 months to clear your exam. Please attempt, बोलना ही नहीं है. This is our exam and we are going to pass in the first exam itself. Those students who are very sincere about from first day are going to clear this exam. So those students normally do all lectures properly, and just listening is not of use. So जो बाद में करते हैं YouTube पे, चलो अभी संकेत सर के लेक्चर बाद में देख लेते, कुछ फायदा नहीं होता है. सो फर्स्ट डे से आपको सीरियस रहना पड़ता है. आपके स्टडी के लिए लाइव लेक्चर में आना पड़ता है, सर के क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ता है, तब जाके आप एग्जाम क्लियर हो सकते हो. और जो स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, चलो अभी है ना, हाँ अभी लेक्चर सिर्फ एक गाने के जैसे सुनते रहते, उनका कोई यूज नहीं है. जिन्होंने 400 पेजेस की नोटबुक मेंटेन नहीं की, जिन्होंने 100 पेजेस की नोटबुक मेंटेन नहीं की, उनको एंड जो होता है वो भी बहुत दर्दनाक हो सकता है, मतलब रिजल्ट का एंड. तो इतना याद रखो. सो जो पहले से अच्छे से पढ़ाई करेगा वही गोइंग क्लियर दिस एग्जाम. तो ये मैं हमेशा बोलता नहीं रहूंगा, बट आपको मेरा स्पीड मैच हुआ रिवीजन का, इसका मतलब आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया. ओके, अभी आज देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन करवा के लेता हूं. सो बिल ऑफ एक्सचेंज एंट्रीज, प्लीज रिकॉल दिस एंट्रीज फ्रॉम द फर्स्ट डे. वी आर गोइंग टू रिकॉल की फर्स्ट डे पे हमने देखा था बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉवर नॉर्मली ही इज अ सेलर एंड बुक्स ऑफ ड्रॉइंग इज अ बायर. सो सेलर फर्स्ट एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. टुडे लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन मैच माय स्पीड. आज का स्पीड कितने बच्चे मैच कर पाते हैं. आज तो टिकटिकी जी को भी स्टार्ट करते हैं. एंट्रीज कितने मिनट में याद करवा सकता हूं. सो टिकटिकी जी जल्दी बाहर आइए. यस. और कितने मिनट में एंट्रीज हो सकते हैं. आपको मेरे से 2 मिनट एक्स्ट्रा लेने हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा, एंड टेल मी यूर चैलेंज कि आपने कितने मिनट में कंप्लीट किया था. तो टुडे माय स्पीड, बुक्स ऑफ ड्रॉवर फर्स्ट एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. डेटर्स अकाउंट के बाद ही विल ड्रॉ द बिल. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. देन इट विल बी डिवाइडेड इन द 4 सिचुएशन. सिचुएशन नंबर 1, बिल इज रिटेन, नो एंट्री. बिल इज डिस्काउंटेड, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बिल एंडोर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. Remember, in case of honor, first entry will be bank account debit to bills receivable. Second entry no entry, third entry no entry, and last one, last situation में entry will be bank account debit to bill sent for collection. In case of dishonor, drawing account will be debited, drawing account debit to bills receivable. Second entry, drawing account debit to bank accounts. Third situation, drawing account debit to endorse account, and last situation will be drawing account debit to bills sent for collection. Drawings books. Drawings books, my first entry will be purchases account debit to drawer account or creditors account debit to bills payable. Third entry will be honor, bills payable account debit to bank, and last entry will be bills payable account debit to creditors in case of dishonor. So these are 49 seconds, 50 seconds का challenge दिया है. I'm giving you challenge of 50 seconds, और मैं और स्पीड से बोलूंगा तो ऑलमोस्ट 25 सेकंड भी लग सकते हैं विदाउट
ये हो सकता है, तो 30 सेकंड्स भी मेरा टाइमिंग हो सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं फॉर दिस 50 सेकंड्स। चलो, सो आई होप यू एंजॉयड टिल नाउ। बिल सेंड फॉर sorry, bill of exchange, not very difficult chapter. Last session में we have completed accommodation bill. Okay, how many of you can match my speed? Yes, जल्दी से आ जाइए। कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेरा स्पीड मैच किया? रितु तिवारी, फर्स्ट डे से आपका लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। मनीष जैन, आई एम नॉट मिसिंग अ सिंगल सेशन, वेरी गुड बेटा। I did it in the same way. Okay. महावीर जी बोल रहे, प्लीज वॉच माय सेशन वंस अगेन बेटा महावीर। ओके, आयशा 55 seconds, very good. Same case in the accommodation bill. You remember that 900 की entry, X and Y, books of X and books of Y, 900 rupees is required. Total bill of 990. Out of that, 600 will be shared by X and 300 will be shared by Y. So watch that session once again for getting your doubts clear for accommodation bill. So accommodation bill, very, very easy chapter. Very good. Yes. Let's see goods sent on approval basis. Let's quickly revise this. बेटा हिडन एंट्री के लिए आपको, Aisha ji, for hidden entries, you have to revise that topic once again. You have to watch my videos, then revise it properly. कोई दिक्कत नहीं आएगा. You won't face any problem if you got the sequence correct. Okay, sequence से जाओ and you'll get the answer. चलिए, जून में कंडक्ट होगी एकोमोडेशन बिल. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अश्विनी जी. सो आप 2 दिन के पहले के सेशंस देखिए, एकोमोडेशन बिल उसमें आपको समझ में आएगा. वी हैव वेरी लेस टाइम. इट्स नॉट अवर फेस टू फेस बैच विच इज गोइंग ऑन. सो हमारे पास टाइम भी कम है और हमें 4 यूनिट्स और कंप्लीट करने हैं, 3 यूनिट्स और कंप्लीट करना है. तो प्लीज कृपा करके आप लोग थोड़ा सा पिछले सेशंस भी देखा करो. ओके, तो गुड सेंड ऑन अप्रूवल. कैन यू टेल मी गुड सेंड ऑन अप्रूवल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? फटाफट बोल सकते हो आप. गुड सेंड ऑन अप्रूवल कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था? गुड सेंड ऑन अप्रूवल. यस, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए. गुड सेंड ऑन अप्रूवल, हाउ मेनी पार्ट्स बेटा? गुड सेंड ऑन अप्रूवल में वी हैव डिवाइडेड इन 3 parts. Very good, Mahima Jain. First answer by Mahima Jain. First one is casual, second one is frequent, and third one is numerous. Casual approach, frequent approach, and numerous approach. Okay, very good. Casual approach, beta. Casual approach, please quickly revise this, is divided in if acceptance or rejection before 31st March and after 31st March. In casual approach, first entry will be, yes, can you tell me first entry? Casual approach में first entry. Very good. Debtors account debit to sales account. Debtors to sales at which price? Invoice price. Here also same entry. Here also same entry. Tamanna Patti, Tamanna ji, yes, I will clear your doubts only, but later we will solve your doubts at the end of all these 4 to 5 units. So make sure
I will answer all your queries after completion of these 4-5 units. एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट भी होने जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा. वन सेशन आई विल टेक, आई विल रिक्वेस्ट ICI to give me one session to clear your doubts and past examination question. I know this chapter is really difficult one, so एक सेशन मिलता है तो मैं उसमें सॉल्व करूंगा. बट टुडे आई हैव सम डिफरेंट टारगेट्स. ऑलरेडी वी आर लेड बाय वन डे. एक दिन हम लोग ऑलरेडी डिले है एज पर अवर शेड्यूल, तो आप प्लीज कृपा करके थोड़ा सा मुझे समय दीजिए. ओके, क्योंकि टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो भी है कंसाइनमेंट चैप्टर. तो आज थोड़ा सा हमें कंसाइनमेंट के एंट्रीज भी देखने हैं. चलो, सो डेटर्स टू सेल्स विल बी फर्स्ट एंट्री. इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस हुआ बिफोर 31st March, नो एंट्री. एंड रिजेक्शन entry will be sales account debit to debtors account. Sales account debit to debtors account. On 31st of March, on 31st of March, first entry will be, yes beta, what is the first entry? We will reverse this entry, sales account debit. हाँ, और acceptance का entry, yes, no entry if invoice price is equal to selling price. If invoice price is greater than selling price, same entry. And if selling price by difference amount, beta, and if invoice price is less than selling price, reversal entry by difference amount. Difference amount की entry होनी चाहिए. Yes beta, yes, correct. Acceptance and rejection. In case of say 31st March में sales account debit to debtors account, that we will reverse it. And goods lying with customer or inventory lying with customer account debit to trading account at cost or NRV, whichever is lower. And after that, after 31st March, if acceptance, debtors to sales at selling price, and rejection, no entry. Rejection, no entry. So this is a quick revision. Those who are very clear with this concept won't get any problem. So please make sure that you watch my previous sessions. Very good बेटा. तो चलो आज आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में. चलो जल्दी से कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1. चलो इलस्ट्रेशन 1. C sends goods to his customer on sale or return basis. The following transactions took place during 2019. टिक टिकी जी, बाय बाय. हाँ. So entries are very easy. I'm not going to write these entries now because already you know all these entries. CE sent goods to his customer on sale or return basis. The following transactions took place during 2019. September 15. Send goods to customer on sale or return basis at cost plus 33.33%. What is given in the question? It is cost plus 33.33%. So this is invoice price. What is called as invoice price. When goods are sent, pass entry of sales. Sales की entry pass कीजिए. Okay. So sales की entry. Sales की entry.
Before 31st of before calendar, or sorry, before year ending, acceptance and rejection. Write down over module. स्टडी मटेरियल के ऊपर लिख के रखना. बिफोर ईयर एंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन. आई? चलो, एंट्री आई आप लोगों को बेटा. डेटर्स टू सेल्स. फर्स्ट एंट्री, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स. सेल्स की एंट्री. फर्स्ट एंट्री क्लियर. प्लीज टुडे प्रॉमिस मी सर, I will write all these index. I will give you it in the writing. Don't worry. Index में देता हूं आपको. Goods returned by customer. Reversal entry. Reversal of sales entry. You can write over here. Reversal sales entry. So debtors to sales, sales to debtors. What is the reversal entry, beta? Reversal entry, sales to debtors. You can see here, sales to debtors. So first entry, second entry is easy. And November 25, acceptance, approval. Approval entry, no entry, because we already passed this entry at the time of sending goods. So sent may already included. Already passed in goods sent. You can write over there. Already passed at the time of goods sent. Already passed at the time of goods sent. Easy, che? Yes. And the last one, goods lying with customer, two entries. One is of reversal entry, and lying with customer entry. Lying with customer at what price, beta? At what price? 100 rupees is cost. Invoice price is 133.33. Invoice price cost plus 33.33. So if 20,000 is invoice price, what is the cost? You can take on calci. Mera calci. Okay. Sorry, you have to write. Beta 20,000 के नीचे 20,000 you will write it below 133.33. Sorry. Everyone, please write it in the comment section. September 15 ko how many entries? September 15 one entry. October 20 kitne entries? Then November 25 kitne entries? And December 31st how many entries? So write down in comment section. Chalo fatafat. Write down.
I hope you are clear with this concept now. Very easy है. Yes, yes, yes. आवाज आने लगी है अभी. म्यूट हो गया था. चलो फटाफट. Students, please one request to all of you. Don't miss a single session. कितना भी काम आए फिर भी एक भी सेशन मिस मत करना. बेटा भरत चौधरी, प्लीज गिव इट वन बाय वन. एक एक कमेंट में मत लिखो, एक साथ पूरा लिखो. भरत जी एक साथ पूरा लिखो. सितंबर सीआरओ स्टूडेंट्स एक साथ पूरा लिखो बेटा. टुडे मेनी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम. Many students who are from day one from foundation, they cleared today both groups. तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. बट उन्होंने फर्स्ट डे से मैं जो बोलता था वो फॉलो करते थे. वेरी गुड रितु. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स. चलो फिल अप द इंडेक्स. इंडेक्स को भर दो. इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी कैटेगरी क्वेश्चन. कैजुअल मेथड. You can write before year end, acceptance and rejection. चलो हो गया. Before year end, acceptance and rejection. Write down and tell me over after writing. So write down index. Index में क्या क्या कॉलम बनाओगे? Serial number, page number, remarks and category. So index B category का question था ये. This question is of B category. So yes, easy. Serial number, page number, remarks and category is very simple. So fast. Tell me over in the comment section after writing first illustration index. चलो हो गया.
This guy is over. First question, casual method, total sales, return inward, no entry for acceptance. Acha, what is category? Are Punjabi asli. Category means A category questions are always very high priority questions. B category question बेटा थोड़ा कम होगा. C category lowest. ABC analysis करना चाहिए ना लाइफ में. And last one is बेटा Z category. बहुत ही फालतू क्वेश्चन. चलो. बिल सिसेबल बुक भी पढ़नी है. मुझे नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन. अनमोल पटवा, आई कांट गेट यू. Yes. Second one, beta. Amit runs an online store wherein the goods are casually sold on the sale or approval basis. The following information provided to you during 2020. Sale on approval basis, 25% on cost. Okay. Approach is not asked. Are sold ordinary in course of online business. Assume that it is provided that on 15th April. So next year question is also asked. Same year and next year. Understand first. Amit runs and he sold goods casually. Casually, beta, first method, casually. Sales on approval basis, 25% on cost. So beta, 100 cost. So invoice price on cost. So cost will be 100. 25% on cost means cost is 100. So invoice price is 125. Now 1,20,000 is cost. So what is the invoice price? Take on calci, 1,20,000 into 125 divided by 100. So what is the answer? 1,50,000. 1,50,000. You can write here 1,50,000 invoice price. So whenever goods are sent, you will pass the entry for sales entry. Goods returned by customer. So what is the amount, beta? 1,50,000. What is the entry? Goods returned by customer. Reversal entry. Goods returned by customer. So first entry, trade receivable to sales. Yes, 1,50,000. Second entry, 20th Feb, goods return, sales account debit to trade receivable. So reversal entry. Sales ka opposite entry. Yes, goods for which approved by the customer. So what do you think? On 15 March, what will be the entry? चलो 15 March को क्या entry होगा बताइए. 15 March. यस मनीषा, आप हिंदी मीडियम से होने के बावजूद आप इंग्लिश में लिख सकते हो. अकाउंट्स का पेपर आई थिंक इंग्लिश में रहता है. आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर इंग्लिश में रहता है. तो यस, वेरी गुड. अरे वाह 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 वाह. मेनी स्टूडेंट्स आंसर सर नो एंट्री फॉर 15 मार्च. एक बंदे ने कर दिया. अरे विकी कुमार, हाउ यू कैन पास एंट्री ऑन 15th मार्च? 15 मार्च को एंट्री नहीं आएगा ना बेटा. एंड ऑन 31st मार्च, यस, हाउ मेनी एंट्रीज ऑन 31st मार्च? चलो जल्दी से बताइए. ऑन 31st मार्च हाउ मेनी एंट्रीज? ऑन 31st मार्च? यस, वेरी गुड. Yes, now you all are very intelligent guys, बेटा. सबको समझ में आया. Very good. No entry. And on 31st March, how many entries, बेटा? Yes. How many entries? Very good. Who answered very fast? अनमोल पटवा. अनमोल पटवा ने सबसे पहले आंसर दे दिया. Yes. One is reversal entry. And second one is goods lying with customer. Inventory lying with customer account. This is at selling price. And this will be at cost because invoice price is higher. How to calculate beta cost? 100, 125. 125 के नीचे लिखेंगे 30,000. So 100 के नीचे कितना? So take on calci 30,000.
into 100 divided by 125. So what is the answer? 24,000. 24,000. Chalo, write down fast. Yes, write down. So last entry will be selling price to trade receivable and goods lying with customer to trading account. Now, up 15th April, the customer have rejected the goods. So beta, no entry. No entry in after 31st March. After 31st March, no entry. No entry after 31st March. Easy che? Illustration too easy. Let's see the answer. Index, yes. Let's see index. Write down index, beta. So please, can you give me date-wise bifurcation? Similar to last question. Next year, beta, rejection no entry, acceptance entry. And current year, return no entry and acceptance entry. So what is the new thing here? Cost is given in the question and you have to convert this question into selling price. Not selling price. You can write over here invoice price. Invoice price. Similar to ILU1, this is also B category question. So write down index and tell me over. The entries are also asked in this question. Next year entries. Current year no entry. If for return entry and acceptance no entry. Hey, big question difficult nahi yaar iska. How many of you already solved these questions? Huh? Just want to see your sincerity. कितने बच्चे जिन्होंने 2 दिन में कंप्लीट किया ये? हाँ, जल्दी से बताओ. And tell me genuinely, yeah, क्योंकि कल yesterday what happened? I will give I will tell you one incident. Yesterday what happened? In Pune branch, we started with inventory valuation. I took almost 8 days to finish all these illustrations one by one. In Pune branch, we have some separate method because batch is face to face, so we are getting more time. Daily 6 to 8 hours classes are there, so we are getting more time. So what happened yesterday? Out of almost 100 students, only one student completed. Only one student.
completed beta all from starting to end, all illustrations. इतना बुरा लगता है ना जब कोई फैकल्टी आपके ऊपर मेहनत लेता है, आपको इतना बार वो चीजें बताता रहता है. आई एम नॉट लाइक अदर कि बाबा मुझे रिजल्ट्स मैटर करते हैं कि भाई सीए कोर्स है, अभी हमारी फैकल्टी कैसी थी, चलो सीखो करो, आपको आपका करना है. मुझे ना आपके ऊपर मैंने मेहनत लिया फेस टू फेस बैच में, मुझे बहुत बुरा लगता है. बट स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर इन दिस डेज. आई रिमेम्बर माई डेज. बेटा वन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आजकल कैसा हो गया कि आप लोग इजीली गिव अप कर देते हो. ठीक है, ये अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एक और अटेम्प्ट ट्राई करते एंड देन सीए कोर्स गिव अप करना. सीए कोर्स कभी आपको गिव अप नहीं सिखाता. आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स इन माय डेज, एकदम सिंसियर स्टूडेंट्स, दोज हु took almost 8 to 9 attempts but they never skip this course. बट आजकल तो ऐसा फैशन हो गया, अरे एक बार सीए ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो लाइफ में करने के जैसा बहुत कुछ है. तो ये चीजें ना बहुत चुभती है कि क्या मतलब स्टूडेंट्स क्या समझ में लेते हैं, कोर्स को इतना लाइटली लेते हैं, पर क्या कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं. आजकल जनरेशन इतना, मैं देखता हूँ आप लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम है, बहुत कम है. सोशल मीडिया पेशेंस ये आपको है ना जीरो करते जा रहा है. देखिए इसके ऊपर सोचिए एक बार अच्छे से कि हम लोग किधर है और हमारे पेशेंस लेवल. आज आपके मॉम डैड आपको जो दे रहे या मेरे मॉम डैड ने जो दिया था ना, उससे 50 गुना में मेरे बच्चे को ज्यादा दे रहा हूँ. क्योंकि हमें, मुझे याद है कितने कपड़े मिलते थे, जितना दक्ष को मैं एक साल में कपड़े देता हूँ उतना तो हमारा लाइफ टाइम 12th स्टैंडर्ड तक हमें कपड़े दिए नहीं थे इतने सारे. पर आजकल क्या है, आप लोगों को आपके मॉम डैड की भी कदर नहीं बची है. उनके एफर्ट्स, आपके टीचर के एफर्ट्स, बहुत ज्यादा पेशेंस बढ़ाने पड़ते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू डन? मनीष जैन बोल रहा है सर आई हैव डन सर. डिम्पल बोल रही है आई सॉल्व इट. महिमा हाफ. अब इसमें हाफ क्या सॉल्व करने वाला था महिमा? ठीक है, और फिर बोलते हो 100 में से 20 बच्चे पास हुए. चलो ठीक है, जाने दीजिए. सर्वेश बोल रहा है ओनली 7 क्वेश्चंस रिमेनिंग. अरे है ही कितने क्वेश्चंस बेटा, 5 और 3 8 क्वेश्चन, उसमें से 7 क्वेश्चंस आर. अच्छा 7 इलस्ट्रेशन मतलब ओनली लास्ट वाला इलस्ट्रेशन, 7 नंबर का तो इलस्ट्रेशन है ही नहीं इसमें. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं. मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन रिटर्न बेसिस ऑन कैजुअली. कैजुअली मतलब मेथड नंबर 1, अंडरलाइन कैजुअली. दिस इज ऑल्सो मेथड नंबर 1. He has sold goods worth rupees 1,50,000. Sold goods 1,50,000. 1,33,000. 1,100 rupees के गुड्स 133.33. 1,50,000. Sorry. It's wrong equation. Equation is wrong. 133.33 and this is 66.67 because sales will be 100. 33.33% on sales. So sales will be 100. On cost is 100. Cost is 66.67. Cost is 66.67. Got the concept? So he sold goods worth rupees 1,50,000. He sold goods 1,50,000. Sold at a profit of 33.33% on sales.
which has been awaiting approval from the customer on the date of closing the books. Closing the books में approval बाकी है. After the expiry of the period, the customer have accepted goods equivalent to 75% after the expiry of period. %75% of the goods and rest can be considered as rejected. So on closing book, closing day, first you will reverse the entry. Second, goods lying with customer. Now 100 rupees के goods है 1,50,000. So what is the cost? 1,50,000 into 1,50,000 into 66.666666 divided by 100. It is 1 lakh rupees. So sales account debit to debtors account and goods lying with customer account debit to trading account. This is on closing date. Closing date entries. And now, so 2 entries are there on closing date. And after that, goods are accepted. How many goods are accepted? 75%. So 1,50,000 into 75%. Goods are accepted. So 1,50,000 into 75%. 1,12,500. So the debtors account debit to sales, acceptance की entry will be there and rejection no entry. Rejection no entry. Easy है? अरे easy है के? Third entry is very easy. Closing entries, sales reversed, and here percentage on sales. You can write this. Illustration number 3. Illustration number 3 जल्दी से लिख लीजिए. जल्दी से लिख लीजिए. चलो fast. Write down over after writing this. एक्सपायरी डेट पे बेचा नहीं है. एक्सपायरी मतलब क्लोजिंग डेट पे हमने एंट्री पास की. एक्सपायरी के बाद तो हम लोगों ने वहां पे एज्यूम किया 75% सोल्ड. अंकिता कैसे हुआ? क्लोजिंग बुक पे हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया कि कितना माल बेचा है. क्लोजिंग डेट के बाद आपका एक्सपायरी डेट आया. एक्सपायरी डेट पे 75% ने हाँ बोला था तो 25% ने नहीं बोल दिया. इसका मतलब अंकित, अंकित सॉरी नॉट अंकिता, अंकित है. ओवर पार्ट 1 क्लोजिंग एंट्रीज एंड पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर एंट्रीज.
यस रुचिका, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स, डोंट वरी, ओवर सर बोल दिया है आप लोगों ने। यस 4 नंबर पे आता हूँ। चलो लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Almost. S Limited sent goods to dealers on sale or return accounts basis. All such transactions are, however, treated as actual sales. Actual sales means beta casual approach. You can write over here whenever you are sending goods and if you are following casual approach, तो ये आपका casual approach हो जाएगा. Just before the end of the year, 31st March, 200 such goods have been sent to a dealer. This is invoice price. 200 goods, first entry, sales entry, 200 goods into 250. So what is the amount? What is the amount beta? Sales entry 200 into 250. अरे मैं ये क्या कैलसी पे कर रहा हूँ? 50,000 sales entry, debtors to sales. Then 50 were written, 50 written, no entry. No entry. Oh, sorry. 50 written, entry will be 50 into 250 rupees. 50 into 250, 12,500. 70 sold, no entry, acceptance, no entry for acceptance, and you left with, देखो 200 था, 50 और 70. You left with beta 80 beta, what are these goods na? 80 goods only. हाँ, 80 goods into, so here 2 entries, 80 goods you left. So इसमें A entry sales reverse 80 into 250, very easy question. 80 into 250, 20,000. And goods lying with customer, inventory lying with customer, 80 into 200, 16,000. 80 into 200. So 31st March को रिटर्न की एंट्री होगी. So this entry is not asked. Return की entry by 12,500. Yes. Then sales to debtors 20,000 and goods lying with customer account debit to trading account 16,000. Chalo. So you got this fourth illustration beta. Fourth illustration easy tha. Have you written these all things? Only boxes, instead of having amount, we have to calculate amount. Okay, we have to calculate amount and they have given you goods. चलो जल्दी से लीजिए. चलो फास्ट लिखो. On 31st of March, 2, 3, 4 में 2 entries. Don't pass entry of goods sent because on 31st March उन्होंने पूछा है. On 31st March उन्होंने पूछा है. एटी कहां से आया? अरे रितु, इतनी होशियार स्टूडेंट ऐसे कैसे बोलेगी 200 माइनस 50 माइनस 70? बेटा रितु, तू ऐसी चीजें पूछेगी तो कैसे होगा? साइंस बैकग्राउंड वाली है तू. 200 माइनस 50, 50 रिटर्न. अरे 200 भेजे थे, 200 भेजे थे, उसमें से 50 रिटर्न आए, 70 बेचे, तो बचा कितना बेटा रितु? क्या कर रही है बेटा रितु? एकदम सिंपल सिंपल चा.
Illustration 4. Anmol, I will keep a separate session for this now, bills receivable and bills payable. बताता हूं मैं. चलो, Cali company. Last question. Today I am going to explain you what is memorandum books. And after that we are going to take a break. Break के बाद हम लोग मिलेंगे consignment chapter. So break के बाद बहुत important chapter है consignment 1. Please don't miss that session. Consignment का session miss मत कीजिए. Now we are almost at the end of this topic. Sir. Cali company send out 6 gas containers to dealers on sales or return basis. All such transactions are, however, treated as actual sales. Actual sales, beta, casual approach. Just before the year end, financial year, 100 gas containers. कितने gas containers थे? 100 gas of rupees 900 each. 900 रुपया. तो 900 each. उसका क्या हुआ? What is 900 रुपया? Cost है. Okay. So हमें cost से कुछ लेना देना नहीं है. Are debited by 1,200. This is invoice price. And out of this, only 20 cash containers are sold at 1,500 each. Excess difference 300. Difference कितना है? 300. Okay. How many containers बेटा? 100 gas containers. एकदम easy. 100 gas containers. उसमें हुआ क्या दीदी? तो gas containers 100 का था. भेजा कितना? 1200. 1200 is invoice price. Correct है? उसमें से सेल्स कितना हुआ? मतलब ये तो एंट्री करेंगे सेल्स की एंट्री. सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री. देन एक्चुअली दिस इज एट इनवॉइस प्राइस. बट एक्चुअल सेल्स कितलो थयो? एक्चुअल सेल्स हुआ 20 का. 20 का एक्चुअल सेल्स हुआ मल्टीप्लाइड बाय. नाउ टेक डिफरेंस. कितना डिफरेंस? 1500 माइनस 1200. अरे डिफरेंस से एंट्री करेंगे ना. एंट्री बाय डिफरेंस अमाउंट बिकॉज इनवॉइस प्राइस पे सेल्स किया था बट एक्चुअल सेल्स इज बाय 1500. तो डिफरेंस अमाउंट. हाँ सर यू ऑलरेडी टॉट दिस कि 300 डिफरेंस एंट्री होगा. एंड यू लेफ्ट विथ बेटा 80 वी आर गोइंग टू कैंसल 80 बाय सेल्स रिवर्स किया. इसमें 2 एंट्रीज होंगे. सेल्स एंट्री रिवर्स्ड एंड बी गुड्स लाइंग विथ कस्टमर एट 80 इंटू कॉस्ट इज 900. So 96,000 7200 and here entry will be by 6,000 and here entry will be 1,20,000. 1,20,000. So how many entries? 1 of goods sold 1,20,000. You can check. Okay, so goods sold की एंट्री नहीं पास करनी है. Only trade receivable to sales 6,000 and then reversal entry of 96,000 and 7,200. Sorry, 72,000. 80 into 900, 72,000. So you have to pass entry. Don't pass first entry, goods sent की. You have to pass entry of difference and what is the stock that you left with. Easy છે? Index લખવાનો છે. Yes, easy. So what is the different thing in this question? Difference in amount. Sir, fourth का कोई भी इंडेक्स नहीं है. फोर्थ सिमिलर प्रॉब्लम था. Only gas boxes figures are given. Goods in numbers are given. So fourth में goods in numbers are given. You can write in this way. Goods in numbers are given. Goods in numbers are given. So you can write index for this. A category question when difference in amount is given. So this question is थोड़ा सा tricky था. Easy तो है ही, मुझे पता ही है. बहुत इजी है. एकदम इजी है.
Invoice price is less than, yes, better. You can write here. First one, invoice price is less than selling price. Invoice price is less than selling price. चलो लिखो fast. Write down fast and write down over after writing index. A category question.
चलो, come to next question. Yes. Question number 6. Question 6, beta. Now you only tell me for question 6. Question 6 and 7. Chalo. Now you will prepare a chart for me. Chalo, jaldi se batao entries by line by line. E Limited sends out machines costing rupees 200 each. So this is costing. However, it is treated as actual sales, means casual approach. Whenever goods are sent, it is passed as casual approach. Just before the year end, on 24th March, 300 sent at 280 each. So beta 280 is invoice price. So your first entry will be of sales. Second, out of which 90 machines are accepted. 90 machines are accepted at rupees 250. So now your invoice price is greater than selling price. So by rupees 250 minus 280. So it is negative 30. So sales entry will be reversed. Sales entry reversed. 19 to 30. 2,700. 84,000. Third entry. And remaining 210. 210 into 280 reversal. 58,800 and 210 into 200 goods lying with customer. So tell me entries fast. 210 into 200. $42,000 is reversal. So this question is when selling price is less than invoice price. Same question as find number, but only the difference is if selling price is less than invoice price. You can write it in the index. Elu6. If selling price is less than invoice price. Reverse entry, reverse sales entry. इंडेक्स में लिखो बी कैटेगरी. इंडेक्स में लिखो बी कैटेगरी. If selling price is less than invoice price. So what are entries beta? Easy है. Sales को reverse किया. Very good Ayushi. Then 58,800 sales to debtors once again. And then goods lying with customer. So sales to trade receivable, and goods lying with customer to trading account. How many entries you are going to pass? 3 entries. Easy है? Yes, correct है. आप ये इंडेक्स में लिख सकते हो लगे तो. Otherwise you can write in index selling price is less than invoice price. आगे जाना है बेटा. Last entry. Last question. Yes. Now last question, please you solve it and tell me entries.
Last question, you solve it and tell me entries. I will read for you. A sends goods on approval and includes in the sales account. बेटा प्लीज डोंट स्किप दिस चैप्टर इन ऑप्शन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, और यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ऑन 31st March, balance in trade receivable 1 lakh, out of which 7,000 goods sent on approval, on goods sent on approval. Okay. So 7,000 rupees goods sent on approval, of which no intimation was received. These goods were sent at 25% above cost. तो 100 की चीज 125 में भेजी, 100 की चीज 125 में भेजी. ओके, सो 7,000 के गुड्स थे. सो व्हाट इज द कॉस्ट? $5,600. चलो करो अभी सॉल्व. यस, हाउ मेनी एंट्रीज यू आर गोइंग टू पास? सो 7,000 का बैलेंस है. 1 लाख इज टू कंफ्यूज अस. 1 लाख का कोई यूज नहीं है. मिस्टर एक्स सेंड इंटीमेशन ऑन 30th April and why return goods? Make necessary adjustments and show how it will appear in the balance sheet. Very, very important. So this is a new question. Presentation. चलो जल्दी से बताओ. यस, टेल मी दिस क्वेश्चन आंसर्स. कितने एंट्रीज करोगे ऑन 31st March and after 31st March? On 31st March and after 31st March. On 31st March and after 31st March.
चलो over. So entries are very easy beta. Yes, I will tell you entries. First we will reverse entry sales account debit to debtors x plus y, sales to debtors x plus y 7,000. Then inventory is lying with customer. Now beta inventory is lying with customer 5,600. And now in next year, now see here we are ending with the year. So here year ends. In next year, now we will pass entry only of X acceptance. So सिर्फ X का acceptance आया है तो trade receivable account debit to sales. So only X acceptance entry we are going to pass. Now in balance sheet, 1 lakh minus 7,000 because 7,000 is not my debtor. We reverse our debtor. So 93,000 and goods lying with customer 60,000 is inventory and lying with customer beta 5,600. So what is the cost? Goods lying with customer we will show under the head asset side पे asset में under inventory में add किया जाएगा. So 65,600. So this is new. A plus category question. Balance sheet is also asked. So write down in index 7 number में write down in index total debtors including goods sent on approval and inventory are given in question. Therefore, show balance sheet. Show balance sheet. Show balance sheet. Show balance sheet. Okay. Easy. 7th one. Balance sheet presentation is new. I ask you to understand the concept of numerous. How many of you read numerous question? Please. Sincerely बताइए. No, numerous पे question नहीं है. But how many of you read the theory of numerous? Genuinely बताइए. How many of you जिन्होंने numerous की theory read किया है? बेटा this is A plus category question. A plus. A plus category question. Different था. But it is not asked. Only adjustment entries are asked. Adjustment entries are asked महिमा, इसलिए X और Y को सेल्स किया है, ये एंट्री नहीं आएगा. ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछा है तो सेल्स की एंट्री नहीं करनी है. 5-6 नंबर में व्हेनेवर इन क्वेश्चन ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज आर आस्क्ड तो आपको सेल्स की एंट्री नहीं करनी है बेटा. महिमा ने रीड की डिंपल एंड रीचा. बाकी का हमें पता नहीं. सो मेक श्योर कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में आने के पहले दिस लास्ट थ्योरी आप लोग रीड करके आओ. आफ्टर ब्रेक आई एम गोइंग टू टेक कंसाइनमेंट एंड इन नेक्स्ट सेशन फर्स्ट आई विल टेक दैट इन्वेंटरीज का क्वेश्चन. ओके सॉरी ये लास्ट वन न्यूमरस अप्रोच. सो वन मोर डे. Now you are clear with all question answers. So one more day I am giving you for clearing your doubts and concepts of numerous. ठीक है. टेक अ ब्रेक के बाद हम लोग आते हैं कंसाइनमेंट में. 50% ही समझ में आया. ओके ठीक है. नेक्स्ट सेशन में मैं बाकी बच्चों को भी पढ़ने दो. नेक्स्ट सेशन में मैं न्यूमरस ले लूंगा. आफ्टर ब्रेक कंसाइनमेंट के एंट्रीज है, थ्योरी है. सो डोंट मिस इट. कंसाइनमेंट आते हैं हम लोग 12:30. कितना हुआ है? 12:20. 12:30 को हम लोग मिलते हैं. 12:30. ओके चलो स्टार्ट. प्लीज थोड़ा सा खा के आना. अच्छे से ब्रेक ले लेना 10 मिनट क्योंकि नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यस
अच्छा ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टार्ट करूं? ओके, चलो, लेट्स स्टार्ट। Many intermediate students they passed today and they are sending their results, तो थोड़ा कॉल्स भी चल रहे। सो आज थोड़ा सा मोटिवेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी हुए, पर ऐसा नहीं है कि फेल्यूर का रीजन भी उन्होंने ढूंढना चाहिए। एक सेकंड। और यही बात होती है कि जब फेल्योर आता है तो आप एक दो दिन के लिए फेल्योर को ऐसा एक्सेप्ट करते हो और दो दिन के बाद जो भी आपका स्केड्यूल है उसी को कंटिन्यू करते हो, एंड अल्टीमेटली यू कैन सी कि अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बच्चे फेल होते रहते, एंड वन डे ऐसा आता है कि आप स्किप कर देते हो। दैट्स व्हाई वी डिजाइंड अ न्यू स्कीम। आपने देखा रहेगा प्रेसिडेंट जी का सेशन, तो यू गॉट टू नो दैट आफ्टर क्लियरिंग इंटर, suppose there are many students who get, due to some responsibilities, CA फाइनल में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो दे स्टक इन CA फाइनल 6 अटेम्प्ट 8 एग्जाम्स, एंड फाइनेंशियली भी एज भी बढ़ता रहता है एंड फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने इंटर के बाद भी एक डिग्री देना सोचा है एज पर न्यू कोर्स। यस, वेलकम मूव्स फ्रॉम द ICI न्यू सिलेबस। तो आप लोग तो लकी हो एंड यूर सिलेबस इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, तो माइट बी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, बट सिलेबस एक्चुअली गेटिंग रिड्यूस, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नाउ दे डिसाइडेड कि फाउंडेशन लेवल टफ रहेगा, इंटर लेवल टफ रहेगा, बट फाइनल लेवल विल बी इजी एज कंपेयर टू एंट्री लेवल विल बी डिफिकल्ट एंड एग्जिट लेवल विल बी इजी। तो इट्स ऑल्सो गुड मूव वंस अगेन। पर इतना ही बोलता हूँ कि जो भी फेल्योर स्टूडेंट्स है, जो भी अभी लेक्चर्स देख रहे हैं, ऐसा भी होता है बहुत से इंटर के बच्चे आके देखते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल कि यहाँ पे ठीक है, ये फेल्योर मैंने भी देखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट ओनली इन CA कोर्स में एक ही बार देखा मैंने फेल्योर, बट वो जो होता है ना उसके बाद वापस से जो आपको इन्वॉल्व होना रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वापस आप कितना कमबैक कितना अच्छे से करते हो। देखो, हमें तो बताने वाला कोई नहीं था, बट होता क्या है, देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस कि आप लोग क्या करते हो, इधर का लेक्चर देखो उधर का लेक्चर देखो, मीन्स 20 days बिफोर एग्जाम आप मैराथन लेक्चर्स देखना रहता है। अरे भाई, आपने रेगुलर कोर्स से अच्छे से नहीं किया तो मैराथन लेक्चर देख के फायदा क्या होगा। आप अभी की बीच लेक्चर्स जो देख रहे हो नाउ, वॉट एवर लेक्चर्स यू आर वॉचिंग नाउ, उसमें भी दिक्कत ये होती है कि आप उसको एक सिंसियरिटी से नहीं देखते हो। सिंसियरिटी मतलब क्या, कि हमने पहले लेक्चर्स का पूरा एनालिसिस किया, नाउ कंसाइनमेंट, सर ने एक बार कंसाइनमेंट सिखाया, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि घर पे जाके आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आए तो इलस्ट्रेशंस यू कैन ट्राई बाय योर ओन, एंड देन आई विल टेल यू द शॉर्टकट। क्या होता है इधर कि मैं ही आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ, मैं ही सब कुछ सॉल्व करता हूँ और आप लोग सिर्फ देखते रहते हैं कि हाँ सर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें मजा नहीं है। नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बोलो। थियोरी यू हैव टू राइट डेली 3 to 4 क्वेश्चंस, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, और सर इसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत मतलब ऐसा डे जो है ना आपका पूरा स्केड्यूल होना चाहिए कि 5 बजे से 7 बजे तक, दैट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी मेरा डे जो है ना वो पूरा मुझे पता रहता है कि 11 से 1 बजे मेरा लेक्चर है, वो लेक्चर के प्रिपरेशंस क्या करने हैं। अभी तो प्रिपरेशंस की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ ये इतने साल का एक्सपीरियंस है, बट बिफोर ये जब एक्सपीरियंस नहीं रहता था तब मुझे ना, मैं लेक्चर के पहले 2 से 3 घंटे मैं खुद पढ़ाई करता था, एंड देन आई टेक सेशन। तो मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती थी बिफोर टेकिंग एनी सेशन। ऐसा नहीं था कि सेशन को ऐसे ही जाके मैंने कुछ तो वाहियात चीजें बता दी, नहीं होता है। और यही चीज आपका एग्जाम में होता है। तो ये जो चीजें हैं इसको मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूं कि टेक इट वेरी सिंसियरली। आप जितना भी कर रहे हो उसको प्रॉपरली प्लानिंग करो कि मैं 7 डेज का मेरा जो शेड्यूल है, आप ऐसे का इसके हिसाब से जाओ। आईसीएस गिविंग यस, मतलब मैं तो बोलूंगा आईसीएस कोचिंग क्लासेस में ऐसा शेड्यूल कोई बनाता नहीं है पूरे इंडिया में कि भाई कौन सा टॉपिक कौन से दिन पे खत्म होगा। सपोज एक आध बार वो टॉपिक को टाइम भी लग गया तो आईसीएस एक्सटेंडिंग दैट सेशन, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से बोल देंगे कि नहीं नहीं ये हो गया खत्म। आई कैन रिक्वेस्ट हवर प्रिया मैम को, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्रिया मैम मुझे एक दिन का मोहलत एक्स्ट्रा देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें टाइम नहीं देते। हम भी बाय पास्ट एक्सपीरियंस वी कैन अंडरस्टैंड। अभी इस बार हमारा फाउंडेशन का 3 days आई गॉट फॉर एक्स्ट्रा डेज फॉर फर्स्ट चैप्टर। सो हम भी लर्निंग फेज में थे, और ये प्लानिंग मैं तो ये पुणे ब्रांच में भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी, कि ये प्लानिंग कि नेक्स्ट मंथ का पूरा स्केड्यूल एंड हाउ दैट यू हैव टू स्टडी। यू ऑल्सो प्रिपेयर योर 7 days का स्केड्यूल, प्रॉपर स्केड्यूल कि ये टॉपिक मेरा इस दिन में खत्म होगा। सपोज इफ यू 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 आर नॉट कंप्लीटिंग योर टारगेट्स, तो आपके नाइट्स भी आपको यूज करने पड़ेंगे बॉस।
ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में हम लोग मेहनत के बिना होने वाले हैं। और लास्ट के 2 मंथ्स मेहनत करके होने क्या वाला है? फर्स्ट थिंग, लास्ट के 2 महीने कितना भी कर लो, होता क्या है? नहीं होता, किसी से नहीं होता। सर मैराथन लेक्चर देख के कोई पास होने वाला नहीं है। हाँ, मैराथन लेक्चर मेरे से पढ़े हुए हो और मेरा ही मैराथन लेक्चर देखा तो मैं समझ सकता हूं। आप किसी और फैकल्टी से पढ़ते हो, किसी का मैराथन देखते हो, कोई मतलब नहीं बनता। ये और ये चीजें शॉर्टकट्स मत मारो, इतना ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है? टेक इट सीरियसली। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट क्वेश्चन। सॉरी, कंसाइनमेंट चैप्टर। कंसाइनमेंट चैप्टर में शुरू करते हैं आज। एक तो मेरा आपका ऐप बंद हो गया है गलती से। Recording. Unit number 3, consignment account. Unit number 3, consignment account. I'm going to give you some things in writing. So please keep 1 page for that numerous approach. After that, write down in 100 pages notebook, unit number 3, consignment topic. Topic name in 100 pages notebook. Please don't prepare any index for 100 pages notebook. Index का कोई मतलब ही नहीं बनता है 100 pages notebook में. Index we prepare it in 400 pages notebook. चलो, over. Yes. Should I start? वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है क्या कुछ? नो? Now let's understand concept of consignment. First understand the concept. Suppose I am doing and assume I'm in Pune. I have my main business in Pune and I just want to expand my business beyond the boundaries of Pune. My brother-in-law, assume my brother-in-law, वो एक निकम्मा इंसान है, he is not doing anything. So I decided, but he has lot of contacts in one place near Pune, that is Satara, 100 kilometers away from Pune, and he has a lot of contacts in Satara, but he's not doing nothing. So I decided, चलो उसको काम को भी लगा देता हूँ और उसके कॉन्टैक्ट का भी यूज करता हूँ और कुछ तो करेगा बैठे बैठे, निकम्मे जैसा टाइम पास नहीं करेगा. So I will send some goods from my regular business. So suppose if I'm selling 100 boxes, example, so I will send 20 boxes to him apart from 100 boxes and he will sell that goods, but I won't record. It's his responsibility. He will incur some expenses up to Satara, whatever freight charges or whatever goods cost that I will send. He will sell all those goods in the Satara district, and after that, whatever amount he will collect it and will send to me after spending some, after considering some. You don't want to keep books of accounts, trading and P&L and balance sheet for your beyond boundary business. Okay, so you will keep a separate set of books of accounts, which is called as consignment account. You do not have to prepare balance sheet. You will just merge your profits from consignment business in your own business. P&L account, you will prepare consignment account. आप क्या बनाने वाले हो? You will prepare consignment account. You got this concept? Yes. Concept is very clear. वॉइस भी अच्छे से नहीं आ रहा है और नेटवर्क का इशू है. एक सेकंड देख लेता हूं. नाउ इट्स क्लियर बेटा. ठीक है, वन मोर टाइम बिकॉज आई थिंक देयर वाज नेटवर्क इशू. यस, एवरीवन जॉइन बेटा. नेटवर्क इशू था थोड़ा.
वापस से एक बार समझ लेते हैं. Yes, consignment is separate set of business, separate set of books that you will maintain for beyond boundary business. So I will give you one example, so it will be very easy. Okay. Yes, beta, I will explain it again. Don't worry. See important terms first. Understand what is consignment business. So what is consignment business? It is expansion of business beyond local limits. It is expansion of business beyond local limits. Okay, so my business is in Pune and I want to expand this business in Satara. Okay, so Satara में मुझे business expand करना है, so it is called as consignment business. Let's understand the term consignor and consignee. ये दक्ष बताएगा आपको what is consignor and consignee. My business is in Maharashtra. This is Mr. SS. Again, he is Mr. Chotu. So Mr. Chotu, Mr. SS sends goods to Mr. Chotu. SS जो है वो मिस्टर छोटू को कुछ गुड्स भेज रहे हैं. मिस्टर एसएस सेंड गुड्स टू मिस्टर छोटू. So here I am the owner of the business, so I will call it as consignor. Okay, so drawer जो bill भेजता है, so जो goods भेजता है, he is a consignor. Okay, so same drawee relationship. Okay, and drawee to whom bill is sent, here consignee to whom goods are sent. So see the word, similar word, there is drawee relationship, here consignor consignee relationship. So who is consignor? Consignor is a principal and consignee कौन है? Agent. Okay, who is consignee? He is an agent. There is relationship is not buyer and seller. See, seller and buyer की relationship नहीं है. It is principal and agent. Okay, so Chotu is not a buyer. Chotu is only an agent. Okay, buyer is different one. Principal agent relationship. Okay, so consignor is principal and consignee is a beta. So who is getting profit? Consignor gets profit and consignee gets commission. Okay, so consignor gets profit and consignee gets commission. Write down these terms. Okay, write down in your study material. 100 pages notebook. So write down. Write down theory. Write down this A, B, profit, commission, and purpose. Purpose of this chapter. Purpose of this chapter. Write down basics. Write down these 5 points. Who is consignor? Who is consignee? What is consignment? Consignment means if trader wants to expand his business beyond local limits. And after writing up to E, please tell me over. 5-6 students. जैसे ही over बोलेंगे, we will move to next concept. So what is consignment business? Just listen it and write down simultaneously. So trader or manufacturer wants to expand his business beyond local limits is known as consignment business. Who is consignor? Principal who send goods. And who is consignee? To whom goods are received. To whom goods are received. Profit belongs to consignor and agent. Commission belongs to consignee. Yes, everyone beta, it's very simple. What is consignor? And remember, no need to prepare. You can write here, no need to prepare trading and P&L account. If you are doing consignment business you don't have to prepare trading and P&L account. Remember this thing. So this is special transaction.
हो गया? चलो, let's move to next concept. Write down two parties. Write down, sorry, two methods. Now, two methods, I will explain it later, at cost and at invoice price. Just mention it. Two methods of accounting. Two methods of accounting. Two methods of accounting at cost and at invoice price. At cost and at invoice price. Who is consignor, beta? Principal, who send goods. And who is consignee? To whom goods are received. Remember, so two methods ho gaye. Remember, now this is very important. Certain terms. Consignor matlab principal. Now see, he is not selling goods. He is not selling goods. So whenever goods are sold, you prepare invoice. जब देखो, आप जब भी मॉल में जाते हो, मॉल में जाने के बाद आपको कुछ भी माल बेचा, तो वो लोग जो आपको बिल देते हैं, बिल मीन्स इनवॉइस, बिल मीन्स इनवॉइस, ओके. बट हियर goods are not sold. Here goods are only dispatch. Here goods are only सिर्फ भेजा जाता है. Dispatch मतलब भेजना. Okay. So here we prepare pro forma invoice. What we prepare, beta? Pro forma invoice. What we prepare? Pro forma invoice. What we prepare? Pro forma invoice. Okay. Remember the word. तो मैं focus कीजिए. Invoice and pro forma invoice. Invoice is different and pro forma invoice is different. ठीक है? So आप क्या बनाते हो? Pro forma invoice. And when goods are sold by him, when sold, so here dispatch and here sold. So we will prepare account sales. So consignee क्या बनाता है? Write down this. Account sales will be prepared by consignee. And consignor prepares consignment account and consignee prepares P&L account. देखो, consignment account कौन बनाता है? Consignment account consignor बनाता है and consignee P&L बनाता है. So write down these terms. चलो जल्दी से लिखिए. Parties, पूरा चार्ट लिखिए. राइट डाउन फुल चार्ट एंड राइट डाउन ओवर इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में लिखिए. ओवर बेटा. चलो नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन. So what is the difference between invoice and pro forma invoice? Invoice is buyer and seller when goods are sold. And it is prepared by seller, it is prepared by consignor. Seller and consignor. So write down difference between invoice and pro forma invoice. Invoice और इन pro forma invoice के बीच में ये लिख दो difference. चलो चलो जल्दी जल्दी. Yes, make sure that. हे बेटा मनीषा फास्ट लिखना बेटा. चलो 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 फास्ट था. हाँ हो गया बेटा मनीषा. स्क्रीनशॉट ले ले चल जल्दी से. स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो स्पीड स्लो है तो.
Only important points are we are writing in the 100 pages notebook. I am not going to give you everything in the writing. So only important points we are giving in writing, beta. Chalo, fast. Now, very important term. First understand, then write it. First understand and then write it. First, ordinary commission. Second, कौन है? Del creditor commission. And third one is overriding commission. Understand first. Ordinary commission, understand, there are 3 types of commission. Very important concept in consignment chapter. Don't write it. I will give you time. Ordinary commission means I am giving 5% commission to my agent. Okay. So whatever he sold goods, I will give 5% of that. So 1 lakh ke goods beche. So 5% is just imaginary example. So 5%, he will get 5,000 rupees. He will get 5,000 rupees. It's very simple. Now, del creditor. Del creditor. Now, what happens here? The problem is that suppose out of 1 lakh, now who will sell these goods? Consignee. But obvious ना, कौन बेचेगा? Consignee. But consignee ने क्या किया? 30,000 का माल बेचा. 30,000 he sold it in cash. And remember, when we give some extra time, credit period, so beta, our sales is getting increased. So normally, why we give extra time? See, if you are going in the mall, so mall वाला कभी आपको extra time नहीं देगा, credit नहीं देगा, okay? But suppose if you are wholesaler, so but obvious you have to give some time to your retailer, okay? If you are wholesaler, you give some time to your retailer, जिसको हम लोग बोलते हैं credit, okay? So 65,000 is collected. Only 65,000 is collected and 5,000 is bad debts. What happens? 5,000 is a bad debts. Now question is, sir, now bad debts who will bear? But obvious consignee will sell. Consignee will tell you कि भाई bad debts will be borne by consignor. Okay, मैं क्यों bear करूं? मैं तो agent हूं. आपने बोला मैंने माल बेचा. आपने बोला इसलिए मैंने माल बेचा. आपने बोला उधारी पे बेचा. तो bad debts मैं क्यों bear करूं? So who will bear these bad debts? Normally bad debts will be borne by consignor. Normally principal will bear this. But now, suppose if I'm giving you extra commission, okay, extra commission to consignee, कि भाई you take this extra commission and you sell these goods to only those persons who will pay you 100%. Okay, so he will try to find out such credit rating के देखेगा वो. Credit rating मतलब क्या? कि भाई कौन अच्छा buyer है, उसी को माल बेचेगा. So he is getting extra commission in that case. And suppose bad debts will be borne by consignee. Bad debts कौन bear करेगा? Consignee. तो but obvious now consignor will be in the relief बेटा. Bad debts का टेंशन नहीं रहेगा. नहीं तो क्या होगा? कमीशन भी दो, bad debts भी bear करो, तो extra commission दिया जाएगा. And such commission is called as del creditor commission. Now if del creditor commission is given, so who will borne these bad debts? That bad debts will be borne by consignee. Okay, चलो एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. देखो भाई, मैंने आपको माल बेचा, मैंने आपको माल भेजा, यूर कंसाइनी. सपोज एग्जांपल में हम लोग एग्जांपल में लेते हैं वो पंजाबी जो है ना अपना, तो पंजाबी भाई हमारे, यस क्या नाम है इनका? हाँ, पंजाबी आसिफ. तो पंजाबी आसिफ जो है ना वो बेटा हमारे बेटा क्या है, ये हमारे कंसाइनी है. संकेत सर ने माल भेजा पंजाबी आसिफ को. बेटा पंजाबी किधर से? WRO, मतलब महाराष्ट्र से दिख रहा है. अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन से एरिया से. तो इन्होंने महाराष्ट्र में ये कंसाइनी है. अभी इनको मैंने माल भेजा. अभी ये क्या बोल रहे सर? 1 लाख का माल मैंने भेजा, बेचा उन्होंने. 1 लाख का नहीं, 1.5 लाख का माल भेजा, माल बेचा के बाद वो उन्होंने कैश में 30,000 बेचा और मुझे फोन करके बोला सर इधर सेल बढ़ना चाहिए तो आपको क्रेडिट पे माल बेचना पड़ेगा. तो मैंने उनको बोला ठीक है चल क्रेडिट पे माल बेच दे, 70,000 रुपया. वो बोला सर 70,000 ठीक है. मैंने उधारी पे बेच दिया, 10 दिन की मोहलत दी. अभी 10 दिन की मोहलत में क्या हुआ कि 65,000 वालों ने पैसा दिया, 5,000 बैड डेट्स हुआ. अब ये क्या बोलेगा? सर आपको तो फोन किया था मैंने. पंजाबी भाई बोल रहे कि मैंने तो आपको फोन किया था, आपको फोन करके मैंने ये बताया था कि माल मैंने उधारी पे बेच रहा हूँ. आपने तब हाँ बोला था. अभी हाँ बोला था तो 5,000 मेरी क्या गलती है? मैंने तो माल बेचने का काम किया सर. आप मुझे पूरा 1 लाख पे कमीशन दो. मैं बोला हाँ ठीक है भाई, पर 5,000 का क्या? ये 5,000 कौन बेयर करेगा? वो बोलेगा सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मैं बोलेगा यार क्या ये 5,000 इसको कमीशन दिया, 5,000 रुपया बैड डेट्स हुआ, ये पंजाबी आसिफ ने तो मुझे घाटे में डाल दिया. तो अभी मैंने नेक्स्ट क्या बोला? मैं पंजाबी आसिफ को मैंने नेक्स्ट टाइम अकल लड़ाई. अकल क्या लड़ाई? अकल ये लड़ाई कि भाई एक पंजाबी एक काम कर, तुझे मैं ना एक्स्ट्रा कमीशन देता हूँ. कितना कमीशन? सर मैं 7% कमीशन देता हूँ.
कितना कमीशन देता हूँ? 7%। अब ये पंजाबी हो गया लालची, अभी उसने क्या किया, वो बोला सर ठीक है मुझे एक्स्ट्रा कमीशन देना, बैड डेट्स मेरी जवाबदारी होगी, ये 5,000 मैं नहीं बेयर करेगा, ये एक्स्ट्रा 5,000 मैं नहीं बेयर करेगा, ये तुझे बेयर करना पड़ेगा। वो बोला हाँ सर 2% जो है ना, वो 2% आप मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो बैड डेट्स हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे तो दिमाग में से चला गया अभी बैड डेट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बैड डेट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बैड डेट्स ये पंजाबी एसिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एक्स्ट्रा कमीशन हम लोग उसको देंगे, एक्स्ट्रा कमीशन हम लोग जो देते हैं उसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। और ये डेल क्रेडर कमीशन किसके लिए देते हैं? ये बैड डेट्स अवॉइड करने के लिए देते हैं। ये बैड डेट्स कौन बेयर करेगा? कंसाइनी ये बैड डेट्स बेयर करेगा, कंसाइनी ये बैड डेट्स बेयर करेगा, नहीं तो मेरा घाटा हो जाएगा। आया समझ में? तो इट्स वेरी सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, overriding commission. Now what is overriding commission? Let's understand the last part, last part of the commission. Commission का last part समझ लेते हैं। Overriding commission is an extra commission. Okay, now let's take one example. Now रितु तिवारी, रितु किधर से थी बेटा? बिहार से थी ना रितु? हाँ, तो रितु जो है वो रितु, बड़ा ये रितु पूरी बोल बच्चन है। ओके, रितु हैज दैट कैपेबिलिटी टू सेल 100 रुपीज का कॉस्ट। सपोज नॉर्मली सेलिंग प्राइस इज रुपीज बेटा 250, बट 1000 बेटा। ओके, रितु है ना 100 का माल नॉर्मली सब लोग 250 में बेचते हैं आजू बाजू के, पर रितु के पास वो कैपेबिलिटी है, शी इज सेलिंग इट एट 1000 रुपीज। रितु हैज अ कैपेबिलिटी टू सेल, नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज रुपीज 250, बट रितु इज सेलिंग दिस एट 1000। ओके, फुल बोल बच्चन डालती है। ओके, सो रितु जो है ये एक्स्ट्रा प्राइस पे ये माल बेचती है, 100 रुपए की चीज। सो रितु इज नॉर्मली गिविंग मी अ प्रॉफिट। सपोज आई एम सेंडिंग गुड्स ऑफ 100 rupees to, and I'm telling you Ritu to sell it at 250, but Ritu is selling it at 1000 rupees. So I'm giving Ritu on 750 rupees extra commission because this is a skill of Ritu. और रितु जो है ना वो 750 का माल पे 25% एक्स्ट्रा कमीशन आई एम पेइंग। 250 पे तो नॉर्मल कमीशन में पे करता हूं, बट आई एम पेइंग रितु, रितु को एक्स्ट्रा कमीशन टू सेल इट एट मोर देन इनवॉइस प्राइस। ओके, एंड देयरफॉर व्हाटएवर कमीशन रितु इज गेटिंग इट इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग कमीशन। सो ओवरराइडिंग कमीशन मींस क्या? वो बोल बच्चन का कमीशन है। कैसे याद रखने का? बोल बच्चन का कमीशन इज अ ओवरराइडिंग कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन फॉर एक्स्ट्रा सेल्स। ओके, एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस मोर देन इनवॉइस प्राइस। ओके, सो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा जो प्राइस बोलते ये extra commission, overriding commission. So you got this commission concept, now you can write it. Extra commission, it is called as overriding commission. चलो लिखो जल्दी से। यस बेटा रितु, अच्छा उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश में कहां से बेटा? भूल गए मैं। ओके बेटा यूपी वाले रितु जी। यस, सो राइट डाउन दिस कमीशन, types of commission, and write down over after writing this commission types. हाँ, अयोध्या वाली है नहीं क्या तू? ओनली वन स्टूडेंट ओवर बेटा? चलो लिखो फटाफट फटाफट लिखो। नहीं बेटा, अनमोल जी,
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस फ्रॉड कॉन्सेप्ट बेटा, प्लीज। अभी नहीं बताया कंसाइनर ने कंसाइनी को या कंसाइनी ने कंसाइनर, दीज आर दी बेटा बहुत गंदी सिचुएशन है। अब ये इतना हम लोग देखो, जिसको फंसाना है, जिसका नियत ही साफ नहीं है, तो बेटा हम लोग अनमोल कहाँ से करेंगे ना। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये सब कंप्यूटराइज है, और ये सब प्रिंटेड रहेगा हमारे पास, हमारा वॉच रहेगा, हमारे पास कैमराज है, हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा ये मत बोलना कि ऐसा मैंने किया तो क्या, वो तो ब्लैक मनी जैसा होगा ना। तो डायरेक्ट टैक्स ये नहीं बताता कि ब्लैक मनी जनरेट करो करके, हम लोग सिर्फ रास्ता बताते ये करो, बाकी आपको फंसाना है नहीं फंसाना है वो तो अलग बात हो जाएगा। हमने प्राइस ही नहीं बताया सर, कंसाइनी ने छुपा दिया प्राइस, तो ये एथिक्स की बातें हैं। और जिसके एथिक्स अच्छे बेटा तो क्या डरने की बात है कि नहीं। हाँ चलो चलो चलो, हो गया। ओवर राइडिंग कमीशन भी हो गया। अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन वो आप लोग खुद से पढ़ लेना। अकाउंटिंग 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 देखते हैं। हाँ, टुडे वी विल सी द बुक्स ऑफ कंसाइनर। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट of the day. We are going to prepare beta first books of consignor. So I will give you entries in writing. Entries हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे। चलो जर्नल एंट्रीज, चलो राइट डाउन जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनर। ओके, नाउ वन बाय वन एंट्री आई एम गोइंग टू गिव यू इट इन राइटिंग। चलो लिखो बुक्स ऑफ कंसाइनर। चलो लास्ट पार्ट नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा। आई नो नाउ यू आर हंग्री, 1 o'clock हो चुका है, 1:10 पे आ गए। सो नेक्स्ट 20 minutes ओनली, प्लीज गिव मी प्रॉपर टाइम। एक बार एंट्री समझ लो, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड ट्राई टू फिनिश illustration that concept of invoice, sorry, कौन सा मेमोरेंडम बुक्स में न्यूमरस अप्रोच, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व मिनिमम 3 questions ऑफ कंसाइनमेंट, मिनिमम 3 questions ऑफ कंसाइनमेंट नेक्स्ट सेशन में आने के पहले। यू हैव वन मोर डे। बुक्स ऑफ कंसाइनर, let's understand books of consignor. First entry I will tell you all logics. Goods sent on consignment, but what do you think, which topic is more easy? Bill of exchange, goods sent on approval, or consignment you are finding is easy? Yes, at the end tell me, end of the session बताना, अभी मत बताना, तीनों को रैंकिंग करना, which one is better? बिल ऑफ एक्सचेंज तो मजा था यार, तुम लोग उसको सीरियसली लीजिए। एकोमोडेशन बिल इज वेरी इजी। हाँ ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, चलो थिंक लॉजिकली, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो यहाँ पे वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, we never keep any nominal accounts के entries. Expenses हुआ तो consignment account is debited. If income is there, consignment account is credited. Remember. So in consignor books, here you can write for your understanding, no expense or income account, only consignment account. हाँ सर, consignment account, no expense or income account, only consignment account. Yes, here only consignment account is there, no other account, no expense account, no income account. Expense नहीं होगा, income नहीं होगा, only and only कौन सा account होगा? तो consignment account होगा। कौन सा account होगा? Consignment account। मतलब सर खर्चा हुआ consignment को डेबिट दे, सर income हुआ consignment को क्रेडिट कर, डेबिट expenses, क्रेडिट incomes। पर सर here expense account और income account ओपन ही नहीं करने का, कौन सा account ओपन करने का? only consignment account ओपन करने का, only and only consignment account. Okay, ठीक है। So here goods sent, see goods sent, normally goods मेरे से जा रहे हैं, goods जा रहे, goods bye bye for goods. So two goods sent on consignment, goods जाएंगे, okay, and consignment को डेबिट होगा। ओ सर खर्चा दिखाना है, यस आई सेंड गुड्स, तो मेरे लिए तो खर्चा हुआ ना, रेगुलर बिजनेस में मैंने 100 गुड्स बेच दिए। मैं सातारा का बेटा एजेंट,
ओके, सो मेरा ब्रदर इन लॉ, सो ब्रदर इन लॉ को मैंने गुड्स भेजे, तो क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. ओके, सो कंसाइनमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ऋतु, कंसाइनमेंट ना नॉमिनल अकाउंट है बेटा. कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन विजुअलाइज दिस एंट्रीज इन द फर्स्ट इंस्टेंस. ओके, कितने बच्चे फर्स्ट इसमें समझ पाते हैं? यस, गिव चैलेंज टू योरसेल्फ कि सर मैं पहली बार में पूरे एंट्रीज बता दूंगा. Once I understood the entry. So पहली entry very simple, goods sent on consignment, consignment account च्या debit ला to goods sent on consignment. Okay sir, okay sir, I got this. Second entry, चलो. Second entry will be consignor incurred expenses. एक लाइन छोड़ो. After one line, write down consignor incurred expenses. Underline it. Consignor incurred expenses. Who incurred expenses? Books of consignor. And consignor incurred expenses. Consignor ने expense किया. सर expense open करना है क्या? नहीं. Expense हुआ. सर consignment चा debit ला. Consignment चा debit ला. Consignment account debit. Consignment चा account ला debit. Very simple छे. Yes. Consignment account को debit. And sir consignor ने खर्चा किया. सर कैश गया ना मेरे से. Cash goes out to cash oblique bank. To cash oblique bank. Yes, cash oblique bank. Consignor incurred expenses, consignment को debit, cash को credit. So consignment debit, cash credit. It's very simple, sir. Okay, Manish bhai. Manish ji is from SRO, but still he is writing your way of teaching in different language. Better different language, expressions, tone of voice makes every concept easy. Thank you, बेटा Manish. Okay, so different language से आपको डर नहीं लगता क्या बेटा? So consignor incurred expenses, very simple. Consignor ने खर्चा किया, तो consignment को debit, खर्चे को debit, तो consignment. You don't open that consignment expense or income account, okay? And cash or bank account goes out. Cash or bank account goes out. Ah, very good, Ritu, very good बेटा. श्रुति ने भी आंसर दिया. चलो तीसरा एंट्री. Consignee incurred expenses. Consignee incurred expenses. अच्छा, goods goes out. कहां पे goods गए? Goods goes out to consignee. Okay, and now consignee incurred expenses. Sir, consignee ने खर्चा किया. सोच समझ के बताना. Logically, yes. What will be the entry? Think logically. Think logically. What will be the entry? Tell me. Though you are getting a wrong entry, please tell me it in the comment section. Okay. Comment section में बताइए. Though you are getting wrong entry, it's okay. See, who is incurring expenses? I'm not incurring expenses. I'm a consignor. Consignee, my agent will incur expenses. So my agent will incur expenses. Then I have to pay him later. Okay, I will pay him ना. बेटा उसने खर्चा किया तो देना तो पड़ेगा ना बेटा. हाँ, तो खर्चा किया है तो मैं एंट्री क्या करेगा? ओ ओ ओ ओ नो एंट्री कैसे बेटा? खर्चा किया ना भाई, खर्चा किया है, मैंने नहीं किया पर उसने किया तो वापस देना पड़ेगा ना बेटा. आयशा, I have to pay him later. It doesn't mean that he incurred expenses तो मेरा कुछ responsibility नहीं. I have to pay him later ना. Why he will incur expenses for? He is getting only commission. So why he will incur expenses? No one will incur expenses. Agent. Okay, agent will give you that bill. Please reimburse me. Okay, so consignee will never. He will incur expenses, but it is not his pocket expenses. He will recover it. He will recover it from the consignor. Consignor से recover करेगा ना बेटा? आयशा, you're getting this concept, beta Aisha? So entry will be very good. Shreya Tiwari, छा गए बेटा, छा गई आप. हाँ, बैंक अकाउंट को डेबिट कैसे देंगे स्वाति? स्वाति प्लीज थिंक लॉजिकली. खर्चा है मेरा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होएगा एंड दिस इज माय एक्सपेंसेस. सो कंसाइनमेंट एक्सपेंस है तो डेबिट आया, कंसाइनमेंट का खर्चा है. सो दिस इज एक्सपेंसेस टू कंसाइनी. आई विल पे हिम लेटर. ही इज माय क्रेडिटर. So I have to pay him later. Okay. So consignee को क्रेडिट करेगा. मैं किसको क्रेडिट करेगा? कंसाइनी को क्रेडिट करेगा. कंसाइनी
नो बेटा, रितु सेम एंट्री नहीं होगी। पैसा किसको देना पड़ेगा? श्रेया तिवारी ने बताया, कंसाइनी को पैसा देना पड़ेगा। कंसाइनी को बाद में पैसा देगा ना मैं, सो ही इज माई क्रेडिटर। डेबिट द डेटर, पैसा आने वाला है। क्रेडिट द क्रेडिटर, ड्यू रिलेशनशिप। ओके सर, अप्लाई यूर बेसिक्स। यस, अप्लाई यूर बेसिक्स। आयुषी रॉन्ग बेटा, आयुषी रॉन्ग। सो तीसरी एंट्री हो गई। हा हा हा, 3 एंट्रीज ओवर। 1 2 3, चलो फोर्थ एंट्री, सेल्स मेड बाय कंसाइनी। चलो फोर्थ एंट्री, सेल्स मेड बाय कंसाइनी। सेल्स मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने सेल किया। नाउ थिंक लॉजिकली, कंसाइनी मेड सेल्स, but he has not taken any beta, he has collected cash, and that cash we will recover afterwards we will take from him, not now. Okay, so sales he made, he informed on telephone ki sir I sold these goods. Okay, so think logically. चलो, सेल्स मेड इज फायदा या लॉस? सेल्स मेड तो 2 सेल्स तो नहीं आ सकता, बिकॉज वी नेवर ओपन दैट अकाउंट. सो फायदा मीन्स 2 consignment is our income. And whether we are getting cash? No. Who is getting that cash? Consignee. And consignee will pay us afterwards. So what will be the entry? Entry will be very easy, sir. Entry will be consignee account debit. Consignee is a debtor, debit to consignment. Consignee account debit to consignment. It's our income. Consignee account debit to consignment. Very good. Very good. So consigneeच्या डेबिटला, consignmentच्या क्रेडिटला in मराठी. Consignees को डेबिट, consignment को क्रेडिट. Very easy. Sales made by consignee, over, sir, over. Very simple. सप्लायर नहीं रे बेटा, डेटर हो जाएगा. हाँ, चलो नेक्स्ट एंट्री, कमीशन पेबल टू कंसाइनी. कमीशन पेबल टू कंसाइनी. थिंक लॉजिकली, थिंक लॉजिकली. कमीशन पेबल टू कंसाइनी. कंसाइनी को कमीशन देना है. Yes, beta Shreya. Just apply my 3 basic rules of accounts and pass entry for any chapter. Not only for this, even for partnership. If you are finding these entries are very easy, then beta, please, इससे easy accounts है ही नहीं रहा है, एकदम easy है. 3 rules पे मेरा रोजी रोटी चलता है. See. Commission payable to consignee. Sir, Aditya, think logically. Commission payable. Commission किसको देना है? Not yet paid. We will pay it later. It is a payable. It is a payable. First we will balance it out ना. उससे कितना पैसा आने वाला है? How much I have to pay? How much I have to receive? And then I will see net balance. Okay. So commission payable to consignee is my खर्चा. So consignment च्या डेबिटला. Consignment account debit to whom I have to pay this? Consignee ko I have to pay this. So consignee is my creditor. Consignee is my creditor. It's very simple, sir. Creditor. Consignment को debit. काय को consignment को debit? Because it is my expense ना यार. Expense है. Consignment को debit देगा to consignee. Consignee is my creditor. Consignee कौन है? मेरा creditor है. कमीशन पेबल टू कंसाइनी नहीं बेटा, खर्चा है ना. कमीशन पेबल लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी को तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो कमीशन पेबल अकाउंट नहीं ओपन करना है. कंसाइनमेंट, अरे खर्चा हुआ तो कंसाइनमेंट को डेबिट, किसको देना है? कंसाइनी को देना है. सो ही इज अवर क्रेडिटर. थिंक लॉजिकली. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दोज हु आंसर्ड इट करेक्टली. ए बेटा, ये कौन सी एंट्री है? पंजाबी आसिफ तो कुछ भी करता है बेटा, कुछ भी करता है. तू मन में आया वो करता है.
कंसाइनर टू कंसाइनी, अरे भाई कंसाइनर कैसे आएगा बुक्स में? कंसाइनर के तो बुक्स देख रहे हैं, अपने बुक में अपना अकाउंट होता है क्या? संकेत शाह के बुक में संकेत शाह का अकाउंट होगा क्या? थोड़ा लॉजिकल कर बेटा पंजाबी, ठीक है, बट एटलीस्ट यू आंसर इट, ओके, दो यू आर आंसरिंग रॉन्ग, इट्स ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बट यू मस्ट आंसर। यस बेटा कृष्णा, आई कैन वॉच यूर आंसर्स। कृष्णा आपने क्या लिखा है ये मैं देख सकता हूँ, इफ यू आंसर्ड इट। कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, अब ये कौन सी एंट्री की थी आपने, नहीं पता मुझे, ओके। 6 नंबर की एंट्री, 6 नंबर की एंट्री, 4 हुआ, 5 हुआ। बिल एक्सेप्टेड बाय कंसाइनी, बिल राइट डाउन बाय कंसाइनी। But see, this is not our income or expenditure. See, only bills accepted. Bills accepted by consignee means we drawn bill and he accepted it. We are drawer. Okay. Here we are in bracket. You can write we consignor is a drawer. Consignor is drawer and consignee is drawee. Drawee. So drawer है हम लोग. Drawer है तो क्या एंट्री करेंगे? Yes, बेटा. What is the entry? Anushka, wait for some time. Why always consignment को debit credit is not expense or income? Remember, it's not expense or income. Only bills accepted. Yes, beta Aisha. When we pass wrong entry and you correct our entry, we can remember it very well. Very good, beta. इसीलिए तो बोलता हूं ना, आप लोग आंसर देते रहिए, देते रहिए, आंसर्स देना जरूरी है। सोचने का रे, रूल्स अप्लाई, बिंदास जंप मारने की, एंट्रीज करने की, सर के साथ रिप्लाई कर देने का, मेरा एंट्री नहीं आया उसको आईएमपी मार्क करके रखने का, स्टार मार्क करके रखने का साइड में कि ये एंट्री मुझे नहीं आया था, पर थिंकिंग बढ़ाओ एंड नेक्स्ट टाइम वो स्टार मार्क वाले एंट्री देखने के, दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस। कितना सिंपल है। अरे बेटा, why we drawn bill? Very simple, because he has not no money immediately, so he will accept the bill and we will discount it from somewhere. Yes beta, we will discount it. Bills receivable is asset to, very good. Consignee is a giver. Consignee is a giver. Debtor था, उसने बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट किया तो he becomes giver. Debtor becomes giver. रितु, कंसाइनी टू कंसाइनर कैसे बेटा? कंसाइनर कैसे आएगा बुक में? कंसाइनर के तो बुक्स चल रहे, तो कंसाइनर खुद के बुक में खुद कोई एंट्री करेगा क्या रितु? थोड़ा सोचने का बेटा, एकदम सिंपल छे बेटा। आसिफ पंजाबी, आप लोग है ना, वो कौन सा गेम रहता है, पबजी, इधर गोली मारो, उधर गोली मारो, उधर मारो, आप वैसा गेम खेल रहे हो, लगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बता, तू बिल्स रिसीवेबल एसेट छे कि लाइबिलिटी छे? एसेट है, एसेट को कौन सा बैलेंस होएगा? और प्लीज रिवाइज कर लेक्चर होने के बाद, थोड़ा याद करो ये सभी चीजों को, रिकॉल दिस एंट्रीज, गिव इट टू योर फ्रेंड। चलो नेक्स्ट एंट्री, 6 नंबर हो गई, कैश सेंड बाय कंसाइनिंग। कैश सेंड बाय कंसाइनिंग, नाउ थिंक लॉजिकल या, कैश सेंड बाय कंसाइनिंग, कंसाइनी ने उधर से कैश भेज दिया। नाउ प्लीज ये देखो, ये नो इनकम नो एक्सपेंडिचर, फर्स्ट थिंग ही इज ओनली सेंडिंग कैश, कैश भेजना कोई खर्चा इनकम नहीं है, सो प्लीज थिंक इट लॉजिकली, कंसाइनमेंट अकाउंट को ओपन मत करना।
कैश सेंड बाय कंसाइनी। चलो आवाज बताओ क्या एंट्री होएगा जल्दी से। कैश सेंड बाय कंसाइनी 130। मुझे पता है भूख लगी है, भूख लगी है। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। कोई भी गिव अप नहीं करेगा। एंट्री गलत करेगा तो भी चलेगा, कोई भी गिव अप नहीं करेगा। कैश सेंड बाय कंसाइनी, चलो जल्दी बताओ, चलो फास्ट। हाँ, तन्मित कौर ने पहली एंट्री बताई और करेक्ट बताई। कैश अकाउंट को डेबिट होगा, कैश कम्स इन। अरे वाह, एंड एवरीवन हैज गिवन इट। कंसाइनी गिवर। चलो ये विथ लॉजिक किसने बताया? श्रेया तिवारी। श्रेया तिवारी आज तो लॉजिकली बताया। कैश कम्स इन एंड टू कंसाइनी ब्रैकेट में लिखा गिवर। वेरी गुड। महावीर ने भी बताया। वेरी गुड बेटा महावीर। नाउ सेवन एंट्री ऑलमोस्ट सबने बराबर बताया। नाउ एवरीवन इज ऑन ट्रैक बेटा, एवरीवन इज ऑन ट्रैक। हाँ अभी सबको समझ में आया। 7 एंट्रीज, वेरी इजी एंट्रीज। 8 नंबर, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। लास्ट थ्री एंट्रीज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। पेशेंस खत्म नहीं होने चाहिए। लास्ट 3 एंट्रीज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। सी, जब गुड्स ऑन कंसाइनमेंट था क्या था, तब हमने वो उसको गोज आउट किया था ना। उसके पास कुछ स्टॉक बचा है। किसका स्टॉक है ये? हमारा स्टॉक है। सो थिंक लॉजिकल एंड टेल मी। यस, थिंक लॉजिकल एंड टेल मी। 8 नंबर एंट्री, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बेटा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज अवर एसेट, इज अवर एसेट। लॉजिकली सोचो। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। एक बार एंट्री समझ में आया ना, कल तो फिर आप एकदम भारी बोलने वाले हो। एक बार सिर्फ एंट्री समझ में आने दो। नो 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 नो। हाँ वेरी गुड, आयुषी ने बताया। देखो, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होएगा। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज अवर एसेट। हमारी एसेट किसी और के पास है, सो ये हमारा प्रॉफिट है। हमारी एसेट, जब हमने गुड्स भेजा था तब कंसाइनमेंट को डेबिट किया था, तो ये हमारा बेटा इनकम है। यस, किसी के पास हमारी एसेट है, सो ये हमारी एसेट को डेबिट और ये हमारा इनकम है। कंसाइनमेंट अकाउंट, इट्स वेरी सिंपल। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। वेरी गुड। स्टॉक विद कंसाइनमेंट लिखने से अच्छा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। वेरी गुड। रितु, टू ट्रेडिंग नहीं लिखेंगे बेटा, टू कंसाइनमेंट लिखेंगे। 9 नंबर, नाउ कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट भी और लॉस भी। वी विल बी वेरी पॉजिटिव इन आवर लाइफ। तो पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर किया और फिर लॉस ट्रांसफर किया। सो सी, नाउ कंसाइनमेंट बिजनेस इज डिफरेंट बिजनेस। सो वो बिजनेस में मुझे 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? आई अर्न 1 लाख रुपी फ्रॉम माई कंसाइनमेंट बिजनेस। सर माई रेगुलर बिजनेस में से आई अर्न 10 लाख रुपीज। सो 10 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपी, नाउ 11 लाख। सो फ्रॉम कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आई विल ट्रांसफर टू माई रेगुलर प्रॉफिट। वेयर टू ट्रांसफर? इन माई रेगुलर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल को क्रेडिट, प्रॉफिट है ना, पीएनएल को क्रेडिट। सर लॉस हुआ तो पीएनएल को डेबिट। ओके, पीएनएल को डेबिट, इट्स अ लॉस। एंड कंसाइनमेंट को मैं डेबिट देगा रे। सो कंसाइनमेंट डेबिट और हियर कंसाइनमेंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट क्रेडिट। अच्छा, अभी कंसाइनमेंट में बैलेंस कितना बचा? बैलेंस जीरो। इधर बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कंसाइनमेंट में बैलेंस जीरो। कंसाइनमेंट अकाउंट इज गेटिंग क्लोज। कंसाइनमेंट अकाउंट इज गेटिंग क्लोज। सो प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एंड लॉस ट्रांसफर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री इसके बाद कंसाइनमेंट टू पीएनएल एंड पीएनएल टू कंसाइनमेंट। इफ लॉस इज देयर, प्रॉफिट होगा तो पीएनएल को क्रेडिट आएगा, कंसाइनमेंट को डेबिट आएगा। एंड पीएनएल को लॉस हुआ तो पीएनएल को डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सर सिंपल, एकदम सिंपल છે। ओके, एंड लास्ट एंट्री, सी बेटा, when we send goods, when we send goods,
from our business, our regular business. So बेटा when we send goods from our regular business, तो हमारा ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा. किसके क्रेडिट में आएगा? गुड्स गोज आउट ना, सेल्स किधर आता है? सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है एंड में. ओके, सो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. सो व्हाट इज द लास्ट एंट्री? लास्ट एंट्री नंबर 10. नंबर 10, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. सो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में गोज आउट और इसका बैलेंस हो जाएगा 0. गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस 0 हो जाएगा. ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. सो गुड्स है ना, गुड्स किधर जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसका बैलेंस 0 होगा. सेल्स किधर जाता है? ट्रेडिंग में. परचेस किधर जाता है? ट्रेडिंग में. ओके, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो वैसा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट भी एंड में किधर जाएगा? सो दिस इज अ न्यू एंट्री, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट. 10 एंट्रीज आर देयर. गिविंग यू चैलेंज. कितने मिनट में होता है देखते हैं, आज देखते हैं कितने मिनट में होता है. यस, लास्ट एंट्री. जब तक आप लिख रहे हो टिक टिकी जी आ जाइए. यस, रिसेट. फर्स्ट एंट्री एकदम स्पीड में जाता हूं. फर्स्ट एंट्री, चैलेंज टू योरसेल्फ. गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू goods sent on consignment. Second entry, consignor incur expenses, consignment to cash. Consignee incur expenses, consignment to consignee. Goods sold by consignee, consignee to consignment. Fifth entry, commission, consignment to consignee. Sixth entry, bill accepted, so bills accepted by consignee, bills receivable account debit to consignee. Seventh entry will be stock on consignment, stock on consignment. Sorry, seventh entry will be cash sent by consignee, so cash account debit to consignee. And then next 8th entry is the stock on consignment to consignment, profit transfer, consignment to P&L, loss transfer, P&L to consignment. And last entry will be goods sent on consignment account debit to trading account. My challenge to you is 34 seconds without narration. Without narration भी देख लेते हैं. Without narration, consignment to goods sent on consignment, consignment to cash, consignment to consignee. Fourth entry इसका तो consignee to consignment. Fifth entry commission, consignment to consignee. Sixth entry cash sent, cash account debit, bills accepted, bills receivable account